Income minus your investment is equal to expenses. Power of compounding is available both in equity and debt. एज ए रिटेल इन्वेस्टर आप ढूंढ रहे हो किस बैंक में मैं डालने से मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, जिस बैंक में या कोई कॉर्पोरेट डिपॉजिट में डालने से मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ एक्सपर्ट्स आपको ढूंढ के एक पोर्टफोलियो बना देते हैं। जैसे कहते हैं कि लाइफ भी वॉलेटाइल ही है, मार्केट भी वॉलेटाइल ही है। एब्सोल्युटली। कैसे डील करते हैं आप वॉलेटिलिटी से? सिंपल है कि इस बहुत ही खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज एक हीरा खोज के लाए हैं आपके। आप में से जो लोग म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जुड़े हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एडवाइजर्स हैं, वो सब आप सब उनको जानते हैं, लेकिन ये चुपचाप काम करते रहते हैं, इंटरव्यूज नहीं देते। पहली बार मेरे साथ माने हैं तो मैं बहुत ही उनका आभारी हूं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इनका। बैंकिंग कर ली, जनरल इंश्योरेंस कर ली, हर किस्म के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स किए और उसके बाद म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से भी अब ये 20 साल से जुड़े। शोगोतो चैटर्जी, जिनको प्यार से लोग चैटी कहते हैं, और ये प्रेसिडेंट हैं और चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट के। आज इनसे रूबरू होकर बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद शोगोतो कि आप आए यहाँ पर। बहुत समय से आपके केवल मैं प्रेजेंटेशंस वीडियोस पे देखता रहा हूँ और यही उम्मीद थी कि कभी किसी दिन आपको इंटरव्यू भी करूंगा। जरूर। थैंक यू वेरी मच विवेक। आई थिंक आपको मैंने तो बचपन से देखा है आपको। बचपन इन द सेंस जब से हमने करियर शुरू किया आपको देखा है, एंड यू हैव एक्चुअली हेल्प्ड दिस इंडस्ट्री on the education side, and really congratulations on this entire big thing which you are doing for the industry. सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। आप मानते हैं कि इसी की जरूरत सिंपल है? यही है, इसी के कारण मैं आता नहीं हूँ टीवी पे। मैं ग्राउंडेड हूँ, मैं घूमता रहता हूँ और वही सिंपल है ही सिखाते रहता हूँ लोगों को। नहीं आपके, मैं मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू शोगोतो कि आपने जितना काम इन्वेस्टर एजुकेशन पे किया है, बहुत कम लोगों ने उतनी मेहनत की है। बहुत समय लगता है लोगों को के हैबिट्स बदलने में। 73% एसेट्स जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू आ रहे हैं वो है इक्विटी फंड्स में। 16% है हाइब्रिड में, जहां 2-3 एसेट्स में स्कीम इन्वेस्ट करती है। 9% डेट फंड्स में और 2% केवल लिक्विड फंड्स। आगे चल के आपने ये भी कहा होगा तो उनको कि जब से वो टैक्स बेनिफिट सरकार ने हटाया तो कई जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने वो डेट को बेचना ही बंद कर दिया। पर मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगी, आपने ये कहा कि जो टॉप 100 एमएफडीज हैं, उनकी जो परसेंटेज है डेट की वो डबल डिजिट्स में है, और जो छोटे एमएफडीज हैं उनकी सिंगल डिजिट में भी डेट नहीं। एब्सोल्युटली। तो 2 सवाल मेरे हैं। पहली बात, हर प्लानर, हर एक्सपर्ट, आपने भी अभी थोड़ी देर पहले एसेट एलोकेशन की बात की और कहते हैं कि 90% 95% आपके रिटर्न्स एसेट एलोकेशन से ही आते हैं, ना कि पिकिंग से आते हैं। एसेट एलोकेशन में इक्विटी, डेट, इन दोनों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। रेशियो चेंज हो सकता है लेकिन डेट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एब्सोल्युटली। अगर आप डेट में ही नहीं डाल रहे हैं पैसे इन्वेस्टर्स के, तो आप एसेट एलोकेशन कैसे कर रहे हैं? वेट। और दूसरा सवाल मेरा कि डेट हम सब समझते हैं, बैंक डिपॉजिट, और आपने एक आंकड़ा दिया जो बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल देख के परेशान हो गया कि आपने कहा कि FY24 में 25 लाख करोड़ नेट सेल आई बैंक डिपॉजिट्स में। ग्रोथ डेट है, ग्रोथ, यस। और केवल 9,700 करोड़ डेट म्यूचुअल फंड है। ये नंबर बदल गए होंगे दोनों तरफ, शायद बढ़ गए, घट गए, पता नहीं, लेकिन डेट हम सब समझते हैं, जैसे आपने पहले कहा। एब्सोल्युटली। बैंक डिपॉजिट, एफडी, आरडी, ये सब चीजें हम समझते हैं। तो अगर एक टैक्स बेनिफिट चला गया तो क्या मतलब अब वो इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है डेट?
क्योंकि इस पे अगर आप बता पाएं ये दोनों चीज़ों पे। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, दैट्स समथिंग हमारा कंपनी में, और हम लोग पैशनेटली अभी हम 2 साल से बोल रहे हैं। क्या हो रहा है ना, बिकॉज देर आर सर्टेन थिंग्स विच हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग जब चर्चा करते हैं कि बेनिफिट निकल गया, तो इट बिकम्स समथिंग कि अरे ये तो कैटेगरी पे फोकस ही नहीं करते. What was the purpose of that category is something the industry also has actually not been able to articulate ठीक से after the thing got removed, taxation benefit got removed, because एक पावर ऑफ जो कंपाउंडिंग हम बोलते हैं उनको लग रहा है कि इक्विटी से आता है. फर्स्ट ऑफ ऑल डेट से पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है, दैट इट सेल्फ हैज़ गॉट रिमूव फ्रॉम आवर कम्युनिकेशन. तो फर्स्ट थिंग विच वी टॉक इज power of compounding is available both in equity and debt. Now, if the power of compounding is convinced and it's important to all of us to have understood, then what does debt fund do to all of us? Debt fund is basically आप जब पैसा देते हो in a debt fund, it invests into bank deposits, it invests into government securities, इट इन्वेस्ट इन टू कॉर्पोरेट बॉन्ड जो आप ढूंढते हो. एज ए रिटेल इन्वेस्टर आप ढूंढ रहे हो कि बैंक किस बैंक में डालने से मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, जिस बैंक में या कोई कॉर्पोरेट डिपॉजिट में डालने से मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा. यहाँ एक्सपर्ट्स आपको ढूंढ के एक पोर्टफोलियो बना देते हैं. एंड हेंस दिस इज हाउ वी आर री एजुकेटिंग द एंटायर सिस्टम दैट इफ़ डाइवर्सिफिकेशन, और डाइवर्सिफाई कैसे करते हैं लोग 10 बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं थिंकिंग दैट इट इज़ डाइवर्सिफिकेशन. आपको अगर डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, आपको डेट कैटेगरी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी आपको पैसा डालना है, आपको कॉर्पोरेट अच्छे कॉर्पोरेट ट्रिपल ए में डालना है, तो यहाँ है ना पोर्टफोलियो. आप आइए, आप आके इस पर, और मोस्ट ऑफ द डिपॉजिट्स इन इंडिया आर फॉर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, उसके बियॉन्ड होते नहीं, बिकॉज रोल ओवर का एक बड़ा हैंगओवर है इंडिया में लोगों का. पीपल वांट टू रोल ओवर फॉर वॉट एवर रीजन. बट इन डेट म्यूचुअल फंड्स वो जो एक्टिविटी फंड मैनेजर करता है वो कर रहा है. दैट्स हिज जॉब टू आइडेंटिफाई द बेस्ट पोर्टफोलियो, मार्क टू मार्केट, वो सब कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है, हमको उसमें जाना नहीं है. तो इफ़ यू स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, गेटिंग द बेस्ट पोर्टफोलियो and your returns being secured for a long period of time, that happens. This is how we have been trying and to... you can do better than a fixed deposit. Definitely, because you always reinvesting का जो loss है, और आपके पास flexibility है, आप जब चाहें निकल सकते हैं. Also the tax part is at the time of redemption. Tax is not applicable on a yearly basis. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग समझते नहीं है जो कि नहीं उसमें समझ रहे. एफडी में आपको चाहे आपने पैसे निकाले या ना निकाले, टैक्स उस इंटरेस्ट पे उसी साल भरना है. करेक्ट. सो यहाँ पर जब आप बेचेंगे तभी देंगे आप. एंड उस टाइम पे आपका जो स्लैब होगा जो वो दैट इज लेटर ऑन. द अदर पार्ट इज लॉट ऑफ रिटायरल मनी गोज इनटू इंश्योरेंस एंड अदर थिंग. इट्स गुड, दे शुड गो देयर. But what is the purpose? Again, we have done a lot of study before we come back to the market. Without study, we could not come back with conviction. People put money in those instruments, they want a money back. They want something for their sustenance, because everyone doesn't get pension today. How does mutual fund, debt funds satisfy that need without defeating the purpose for which he or she is putting money? SWP, systematic withdrawal plan on debt funds, is a big discovery or this big statement which we have made in the market, and people have started now accepting कि अगर डेट में पैसा डालने से कॉर्पस बन भी गया या नया कॉर्पस आके उस पर हमने SWP कर दिया, which will take care of the sustenance of the family. So that is another communication which we have built. The third leg, I think, which is the last part, is why that 73% or 80% tilt is because we as advisors, as distributors, we are trying to make the client's wealth creation journey. So usme they feel important कि if they have made client wealthy, that's very good.
That is one part of the risk of the client's brain. There's another part of the human being has got various part of the risk. The risk averse or the less risk part of money doesn't come to mutual fund distributors. It goes still into traditional. So I've been telling them that if you are a holistic, advisor, or you want to manage the client's wealth for long term, don't forget this part of the brain of the client. The client will never give you that money because उसको पता है कि मेरे को अगर रिस्क का नहीं लेना, I have got many avenues, so I'll go and participate there. जो आप हमको बता रहे हैं उधर मैं आपको पैसा दूंगा. I'm happy, but I'm also happy there. Why don't you come and take? And that's where the larger distributors, when they do a balanced portfolio, they guide the investor over long periods of year. Their portfolio is very balanced. Market volatility does not impact the portfolio, returns. It gives you protection. I myself am an investor, for the last 18 years in our short-term fund. It has given me 7.5% compounding. I'm happy. But it also gives me protection against a lot of other, events, because market will be choppy. So there are many factors we are trying to bring in while communicating, and that's how the investor has started now coming back into this category. But it's a long journey. It's a very long journey. नहीं, पर आप देखिए ना कि 250 लाख करोड़ बैंक डिपॉजिट में है उधर. That is good, but नहीं, इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहा है वो पैसा पोस्ट टैक्स बेसिस. Absolutely. So you got to find that opportunity to come to mutual funds. मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर आप बहुत काम करेंगे, SWP खासकर. SWP मेरे को तो is ऐसा something- लगता है शोभतो कि हमने SIP पे बहुत फोकस किया. Yeah. और लोग अब SIP समझते हैं, पर और ये केवल रिटायरमेंट के लिए नहीं है. आज आप देखें लोग सबैटिकल लेना चाहते हैं. जरूर. विमेन का वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस इज कि भाई उनको फोर्स्ड ब्रेक कभी कभी लेनी पड़ती है, और उनकी अगर उस वक्त इनकम नहीं है. जरूर. आजकल आप देखिए जॉब लॉसेस हमारे भी देश में वैसे ही हो रहे हैं, डेवलप्ड कंट्री. इन सब स्थितियों में SWP तो आपको एक मंथली टैप के साथ आपको एक अपनी इनकम आती रहती है. एब्सोल्युटली. और टैक्स एफिशिएंट बेसिस पे आप पैसे विड्रॉ करते हैं, अपने ही पैसे. या आपकी खुद की लास्ट 10-15 साल बहुत वॉलेटाइल रहे. पहले आपकी कंपनी एक इंडियन कंपनी थी, फिर जॉइंट वेंचर हो गया, अब एक फॉरेन कंपनी हो गई. तो जैसे कहते हैं कि लाइफ भी वॉलेटाइल ही है, मार्केट भी वॉलेटाइल ही. एब्सोल्युटली. कैसे डील करते हैं आप वॉलेटिलिटी से? आप वहीं के वहीं रहे. हम और हमारे बहुत सारे साथी सब ये बात मानता हूं. हमारे कैप्टन ऑफ द शिप कंटिन्यूज टू बी देयर. तो एक्चुअली सी वॉलेटिलिटी, जो हम म्यूचुअल फंड जब इन्वेस्टमेंट्स के बात करते हैं, मैंने किसी जन से सीखा था कि वॉलेटिलिटी इज योर फ्रेंड. वॉलेटिलिटी इज नेवर योर एनिमी. डोंट टेक इट एज योर, it will never impact you, but it will always help you in the long term. So that is one side. But when it comes to our professional career, like you mentioned, we have gone through phases. I think what builds an organization is the people. The people in our organization have been here for many, many years. So when these phases kept on coming, ups and downs, and good phase also was there. In the downturn, I think what brought this entire team together was we could communicate properly. We could come and build a trust more stronger in their system. They knew this company much, much better than many of the outside world. So we knew we could come back and we could build a new brand, a brand which was much, much larger than any of in our history which we had. And the longevity and the trust and the ecosystem. I will also thank the distributors also. They gave us huge support. The investors also gave us a lot. So it was a combined thing which, helped us to tide over those tough times. And of course, good times may everyone, enjoys that journey. We still feel that, we are a very, very new organization which is trying to, build, investors and make investors come. Our Sandeep, our CEO, always talks about just look at number of investors which you are bringing. Today, Akra company ka
2.3 crore investors we have got, which we service in our mutual fund company. But I think our aim is to reach that 5 crore, 10 crore goal. So the team is focused on that job. Even in the tough times, our job was to get clients, and build the business, and that keeps helping. So keeping the focus, good communication, having trust on on the entire system. I think that's probably the 3-4 things which we have done right over the years, which is why we have been able to do. Same thing happens to an investor. आप भरोसा रखो in what you are investing in. Don't worry about the near term, volatility, and just exit. If you exit, then the good times is just around the corner and you miss it. Then again you repent. You can't time the market. That great saying is there: timing in the market and time in the market. So you can't. जैसे वो गाना है ना, तूफान को आना है आकर चले जाना है. So how does it matter? बादल है ये Yeah. पल का. You protect yourself. Keep your protections and all those things right. आपकी एक खासियत करियर में ये रही है कि SMEs और HNIs के साथ आपने बहुत काम किया है. तो मेरा एक सवाल है आपसे कि जो लोग वेल्दी बनते हैं, हो जाते हैं, सब बॉर्न नहीं होते, कुछ बिजनेस से, खासकर SMEs, HNIs से. आजकल ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योरशिप भी बहुत बड़ी है भारत में, बहुत अच्छी बात हुई, उससे भी वेल्थ बन रही है लोगों की. लेकिन जो SMEs, HNIs, आपके मुताबिक एक या दो ऐसी क्या क्वालिटीज हैं उनके बिहेवियर में जो उन्हें रिच बनाती है? नहीं, absolutely. I think since I interact with many of them in the past and today also, I think इंडिया में जो एक entrepreneurship का जो एक बड़ा स्किल है, दैट जुनून है लोगों में टू बी सक्सेसफुल entrepreneurs is very, very strong in India. And that I think is multifaceted across sectors and across categories. When we meet people are innovating, people have got that ability कि हमको करना है, इंडिया के लिए काम करना है, हमको तरक्की करना है, हमको इंस्टीट्यूशन बिल्ड करना है, हमको गिव बैक करना है to the society in some way or the other. I think that what has made the SME businesses very, very large in India. And come what may, whichever way the economy moves, we find the SME and the small, entrepreneurs, वो लगे हुए हैं अपने बिजनेस को, चाहे वो इनोवेट कर रहे हैं, चाहे वो उनके फैमिली मेंबर्स को बिजनेस में लेके आता है, चाहे उनको प्रोफेशनल सेटअप करके करना चाहते हैं. I think that's something as a culture shift which has happened in the last 30 years. And transparency is very high. They have brought in transparency in their business because they know that if they aren't transparent and they don't have the trust of the end user or the ecosystem का trust नहीं है, they cannot succeed in business. They can't build a legacy in their business. I think that the other part what Vivek it is coming out is they want to build a legacy. They want their businesses to become big. They want their, the family members and the people who are there to feel proud, and the continuity factor actually should remain for ages. So that's probably a big thing which, I am understanding. And when it comes to the HNI comes basically the byproduct of the, a promoter becomes an HNI or a professional, becomes an HNI. I think the HNI is also, today's HNI wants legacy and their family wealth to be properly conserved and they should grow properly. That's what is in their mind. Are they more patient? They are becoming more and more patient. इसीलिए शायद कंपाउंडिंग से वेल्थ बनाते हैं हम लोग. So power of compounding and patience are correlated. And they will take risk. Of course, once you become HNI, ultra HNI, you do take risk. There is a risk capital always there. But I think 75% to 80% of the wealth, they want to, stay for long term. Reserve and long term. And that's very, very good for all of us because they are, of course, aiding the capital market and the growth of the economy indirectly also. शुभो, तो क्या आपको लगता है कि जैसे आपने बहुत सही कहा और मैं आपको अपने
एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है जब बात करता हूँ लोगों से, कि आज लगभग कम से कम अच्छी डिसेंट सिटी में लोग एसआईपी क्या है, म्यूचुअल फंड सही है, जैसे आपने राइटली कहा, जानते। लेकिन आज भी जो लोग हैं वो, उनको दिक्कत ये पड़ती है कि शुरू करें कैसे, शुरू करें। क्योंकि इस इकोसिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन के इकोसिस्टम से इतने जुड़े रहे हैं आप, कि कहाँ जाएं। इतने हमारे पास आरआईए या सीएफपी या एडवाइजर्स कह लीजिए, एमएफडीज भी कह लीजिए, लाख 2 लाख 3 लाख। हाँ, तो मेरे ख्याल से दिक्कत अब बात इसकी नहीं है कि ये एग्जिस्ट करती है ये अपॉर्चुनिटी। आज भी किसी बच्ची के पास 10,000 की सेविंग है, वो कहती है कि सर लेकिन शुरू कैसे करें। और मैं ये आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि, और इस पे मैं आपसे बहुत सवाल पूछूंगा, क्योंकि आपने अपनी प्रेजेंटेशंस में एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया कि सिर्फ म्यूचुअल फंड इक्विटी के लिए नहीं है। क्योंकि एक परसेप्शन बन गई है कि म्यूचुअल फंड का मतलब इक्विटी। करेक्ट। तो इस पे मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन ये बताइए कि आपके मुताबिक अगर जो भी यंग इंसान आपको देख रहा है और शुरू करना चाहती है, according to you, what is the right way to start investing through mutual? Yeah, I think very important thing. शुरू करें कैसा, जो आप पहले बताया, जो मेरी माँ ने किया, एंड देन जो वॉरेन बफेट साहब बोलते रहते हैं और हम सभी लोग उसका आर्टिकुलेट करते हैं। तो एक ही जो चीज़ है, जब आपके पास कोई पूंजी आ जाता है या आपका अर्निंग शुरू हो जाता है, it is very important first to get that thing in our mind, that income minus your investments is equal to your expenses. ये जो फॉर्मूला है वो आपको एकदम पूरा दिमाग में रखना ज़रूरी है, बिकॉज इट हैपन्स उल्टा ही ऑलवेज। पैसा आ गया, मैं खर्चा करूँगा, फिर बाकी का सोचते हैं। वो जो सोचने वाली चीज़ है वो कभी होता नहीं, बिकॉज वो डिप्लीट होता रहता है, एंड देन द नेक्स्ट मंथ कम्स इन अगेन, वो जर्नी शुरू हो जाता है, एंड देन आप रूटीन में आ जाते हो, एंड द कहानी फिनिश हो गई। नाउ वंस यू गेट दैट फर्स्ट पार्ट डिसिप्लिन राइट, कि मुझे एक अमाउंट, चलो अमाउंट फिर भी नहीं आया, लेकिन एक जो थॉट प्रोसेस अगर करना ज़रूरी है, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप is very important, that at least have some limited goals in your mind. As a young kid or a young person who is trying to enter or thinking about investments also, मुझे करना क्या है, what is the purpose of my thinking process? If you are thinking the first part, what is my purpose of that? Purpose is maybe small goals. Either I want to be self-reliant on my education. I don't want to depend on my parents are there, but I still want to educate myself, or I want to do something on my own. Do the goals, set your goals. And the third part is the mode of investing में, though early starters के लिए asset allocation is a difficult thing to make them understand, but at least talk to your parents or talk to someone कि the normal, if you go back to history or old times, and today also people put money into different parts. डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, कभी सेविंग्स करते हैं, कोई आरडी करता है, फिर उन लोग इंश्योरेंस गोल्ड में लेते हैं, रियल एस्टेट करते हैं, तो अलग। सो आपको अब सोचना चाहिए कि मैं अपने जो सेविंग्स को अगर मैं ठीक से करूँगा, तो लेट मी फर्स्ट पुट दैट इनटू डिफरेंट बास्केट्स का सोचना शुरू करिए आप। सो once you start diversifying your thought process कि मुझे इस तरीके से सेविंग करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स इज़ द बेस्ट वे टू डू इट। सो फाइनली यू लीड टू म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स आपको इक्विटी तो छोड़ो, आपको कैपिटल मार्केट में जाता है। तो व्हाट आई टेल पीपल इज़, व्हाई शुड यू गेट इनटू म्यूचुअल फंड्स? इंडिया इज़ अ ग्रोइंग इकोनॉमी। आप इकोनॉमी में है, आप इक्विटी में इन्वेस्ट क्यों करते हो, या आप म्यूचुअल फंड में क्यों आना चाहते हो? बिकॉज यू वांट टू कैप्चर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी थ्रू योर इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, इन टर्न बीटिंग इन्फ्लेशन, बिकॉज इन्फ्लेशन मार खाता है हमको, 7% का एवरेज
6% का 20 साल का आप टेनोर लेंगे तो 6-7% का एवरेज है। अभी उसको अगर बीट करना है तो आपको ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी में आना है, बट यू कांट इन्वेस्ट इन टॉप 500 कंपनीज ऑफ इंडिया, तो म्यूचुअल फंड्स हेल्प यू टू इन्वेस्ट देयर। सेकेंड पार्ट इज़, आपको अगर एफडी में पैसा रखना है आप रखिए उधर, लेकिन आपको डाइवर्सिफाई करना है तो म्यूचुअल फंड से भी आप डेट फंड्स में आ सकते हो, या उस तरीके का एक तरीका का एक्सपीरियंस आप दे सकते हो। आपको गोल्ड में रखना है गोल्ड में करिए, उधर प्योरिटी का प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ों का है, स्टोरेज इशू होते हैं, घूम जाता है ज्वेलरी। आप आइए, प्लीज़ पुट इट थ्रू म्यूचुअल फंड। So the mutual fund platform has been designed to make Aam Aadmi come into, convert your savings to a potential investment vehicle. In turn, growth आता है आपका, saving to आपका जो भी गोल है आपका सेट हो जाएगा। So to start off, do these 3-4 steps. तरीका किधर जाना है, आपको 2-3 तरीका है। You can, today, fortunately, at least the awareness levels are so high, you can either go onto a digital platform and understand कि हमको जाना किधर है, through how should I invest, or you go to your nearest, there are mutual fund distributors है, हमारे सब भाई बंधु बहुत सारे जगह पे है, you can knock their door, and they will be happy to participate and help you around, or you can do it yourself if you want. There are various ways and means to do that, but prior to that, don't without planning, don't get into entering the investment mode, which is what a lot of people have done in their journey in the last 3-5 years. कि वो जो digital revolution हुआ है, and after the markets moved up, everyone was hearing about markets, they started participating, but they don't know और कहाँ जाना है, FNO कर रहे हैं, 10 में से 9 लोग पैसे गवा रहे हैं, सेबी की रिपोर्ट ने बताया। Correct. So all those happens because there is, go slow. Please don't be hasty and then say that I put all my money because I am going to miss the bus. You're not going to miss the bus because India is going to keep growing. आपको इंडिया का ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना है थ्रू वेरियस मीन्स, एंड दैट्स द फैक्टर विच यू शुड कीप इन माइंड। इन्फ्लेशन को बीट करना है, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज इन्फ्लेशन बिकॉज दैट इज हिटिंग यू एवरी आवर, एवरी मिनट। आई थिंक दैट्स समथिंग विच इज नेवर बाद में स्पोकन जाके आउट। झटका लगता है, जब स्कूल फी आती है सामने, या फिर जब रियलाइज होता है कि कहीं सेहत खराब हो गई, हेल्थ इश्यूज आते हैं, उसको ठीक से हाउ डू आई नहीं किया। मैनेज, देन यू टेक शॉर्ट टर्म लोन्स, देन योर लोन्स आर वेरी वेरी कॉस्टली, how do you service the loan, all those things starts building and then you get into that spiral. म्यूचुअल फंड में मैं आपका एक रीसेंट इंटरव्यू पढ़ रहा था कि आपने कहा कि अगले 3 या 4 साल में या 5 साल में हम 5 करोड़ से 10 करोड़ तक इन्वेस्टर्स तक हमें पहुंचना चाहिए। जरूर। एक पॉजिटिव साइड है कि जहां पे हम थे 25-30 साल पहले और जहां हम आ गए हैं, एक बहुत अच्छी बड़ी जर्नी हमने की है। श्योर। लेकिन 140 करोड़ लोगों के देश में 5 करोड़ लोगों के पास यूनिक इन्वेस्टर्स हैं म्यूचुअल फंड। करेक्ट। तो अभी तो हमें बहुत आगे और बहुत काम आगे करना है। और आपने तो अपना पूरा जीवन ही तरह तरह के कैंप्स करके, इन्वेस्टर एजुकेशन, लोगों को एजुकेट करने में लगा दी। बिहेवियरली जब आप जाते हैं, क्या कुछ बदला है? नहीं, जरूर। सी, डेफिनेटली हमारा इंडस्ट्री को, और आप जैसे जो इतने सालों से इंडस्ट्री को एजुकेट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड सही है इज़ समथिंग जो लोगों को अभी पता है, बिकॉज मीडिया में इतना कैंपेन होता है आजकल, डिजिटल वर्ल्ड में इतने सारे चल रहे हैं एडवर्टाइजमेंट वगैरह। सो म्यूचुअल फंड सही है, एंड SIP का डेफिनेटली नॉलेज तो है लोगों में। कैसे तरीका आने का वो सब अलग, वो हमारा काम है, दैट्स व्हाट वी डू, बट ब्रॉडली यस, अवेयरनेस तो बिल्ड हो रहा है। नाउ दैट अवेयरनेस अनफॉर्चुनेटली जो हम अभी देख रहे हैं वो Tier A एंड Tier B सिटी तक ही सीमित है। जैसे आप अंदर जाते हो, Tier B से आगे C D में चले जाते हैं, बहुत ही लिमिटेड, बिकॉज वहाँ के जो HNI है उनको पता है, वहाँ के जो रिटेल इन्वेस्टर को कुछ पता नहीं है। आई विल गिव यू सम एग्जांपल। आपने सुना ही होगा कि जस्ट अ मंथ बैक हमने ले जैसे शहर में इंडस्ट्री, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का पहले ब्रांच खोला ना। इट वाज अ वेरी बिग
थिंग फॉर ऑल ऑफ अस कि ले लोग घूमने जाते हैं या हमारे जो सोल्जर्स है उधर हम प्रोटेक्शन के लिए लद्दाख में उन लोग तैनात है, एंड दैट्स अ बिग थिंग दे आर डूइंग फॉर द कंट्री. बट जब हम गए उधर तब हमको पता नहीं थी कि अपॉर्चुनिटी क्या है. एज पार्ट ऑफ दैट इनाग्रेशन हमने बोला हमारे जो जवान हैं उनको हम जाके एड्रेस करते हैं. तो मैंने और हमारी टीम ने भी एड्रेस सम 600 हमारे जवान भाई लोग थे. आप ताज्जुब हो जाएंगे जब मैंने उधर थोड़ा सा सर्वे किया कि आप लोग, बिकॉज उन लोग वो भी तो पढ़ते हैं सुनते हैं, तो उन्होंने 600 में से 10 जन ने हाथ उठाया कि हाँ म्यूचुअल फंड के बारे में हमने सुना है या कुछ किए है. सो दैट अगेन इज़ अ थॉट प्रोसेस फॉर ऑल ऑफ अस कि जैसा आप बोल रहे हो कि काम करना बहुत बाकी है हमें. हम अवेयरनेस है लेकिन करते नहीं हैं लोग, और बहुत सारे लोग हैं जिनको अवेयरनेस भी नहीं है. सो ये जो सोल्जर है, टीचर्स है, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, अलग अलग तरीके का सेगमेंट है इंडिया में जहाँ हमको रीच आउट करना अभी भी बहुत बाकी है. एंड दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी. हैंस मुझे लग रहा है कि 5 से 10 करोड़ का जर्नी में बोलने से नहीं होगा, काम करने से होगा. और काम करने के लिए हाथ चाहिए, अकेला तो हम कर नहीं सकते. तो आपके माध्यम से, बाकी माध्यम से जितने हम लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, और राइट अवेयरनेस. करेक्ट. जनरल इंश्योरेंस, बैंकिंग से जब आप म्यूचुअल फंड में आए, और आप बाय द वे इंजीनियर हैं, तो फाइनेंस में पहली बात तो फाइनेंस में कैसे आए, जरूर. और फिर वहां से म्यूचुअल फंड में कैसे आए? सो आप मुझे अभी मेमोरी में लेके जा रहे हैं. तो इंजीनियर से उस टाइम पे जब 80s में, मिड 80s में जब हमने सोचा कि हमको करियर बनाना है, एंड आई पास्ड आउट इन 92, इंजीनियर बन गया मैं. एंड उस टाइम पे याद है कि हमको कि हर एक जन ढूंढ रहे थे कि करे क्या आगे जाके. एंड देयर वाज ऑलवेज अ प्रेशर कि करियर को और आगे प्रोग्रेस कैसा करे. सो मैनेजमेंट हमने किया. आई डिड एन MBA ऑल्सो, मैनेजमेंट. एंड उस टाइम पे आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट came to my mind was being an engineer, you have learned a lot of things. And I also had worked, because as part of engineering program you have to work also 6 months, and then I was absorbed in a company, though I left it because I had to pursue my management. So I knew the process and the other things as an engineer you learned, but the financial part was important for someone to progress in our career. तो मैंने बहुत इंटरेस्टिंग काम किया. मैंने मैनेजमेंट जो किया, लोग अब एज एन इंजीनियर यू डू ऑपरेशंस रिसर्च में आप करते हो मैनेजमेंट, यू डू इन मार्केटिंग, बिकॉज मार्केटिंग वाज वेरी. मैंने फाइनेंस ले लिया. तो जब मैंने फाइनेंस ले लिया मुझे थोड़ा और अलग तरीके का एक पर्सपेक्टिव मिला कि फाइनेंस में होता क्या है. तभी हमने फर्स्ट टाइम P&L, बैलेंस शीट वगैरह सब समझा. एंड दैट एक्चुअली स्टार्टेड मेकिंग मी गेटिंग इंटरेस्टेड इनटू फाइनेंस. एंड आई वाज लकी, 94 was my pass out, and 94 was the era, 93-94 जहाँ NBFC का बहुत बड़ा इंडिया में एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम 92 से लेके चल रहा था. एंड लॉट ऑफ NBFCs came for campus, लेने. So I had a choice. Luckily I had a choice. I got the first job offer making me go to Calcutta. So उन लोग सोचे कि मैं बंगाली हूँ तो भाई साहब को कलकत्ता पोस्टिंग दे देते. I was determined that मैं तो बॉम्बे का born and brought up हूँ. I should be in Bombay. Just 2 days prior to my takeoff to Calcutta, I get an offer from Bombay, one of the good companies. So I said, okay boss, खत्म हो गया, backpack कर दो. And the journey of finance started in one of the NBFCs, which was very renowned at that point in time. So that's how the finance journey started for me. But engineering always has helped me in my career, because that's something which remains forever, because you have put in a lot of hard work in that 4.5 years to become an engineer. ये बताइए कि आपके पिताजी पब्लिक सर्वेंट थे, PSU में थे, फिर कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में आए, और ऐसे ही हुआ कि जब वो शिफ्ट किए मुंबई, और तब आप आए दुनिया में. हाँ जी. तो सबसे बड़ी बात क्या सीखी आपने उनके एक्सपीरियंस से, अपने माँ बाप के? तो आई एम द ओनली चाइल्ड. तो ओनली चाइल्ड
from childhood, हमारे पेरेंट्स, सभी के पेरेंट्स, you know, they love the child so much, and automatically you start getting to know them very close. But I think the good part in my career, what happened, मेरा father being a, you know, government servant, and then as I grew, he moved from PSU to private sector. He took a very strong, you know, sort of a decision to move into private sector. Generally होता नहीं, हाँ, because उस वक्त इसमें तो तो पेंशन सवाल ही वगैरह का बहुत बड़ा चीज़ होता है. He took a risk, and he came into an industry which was very glamorous because it's the shipping industry and many other things. But he was a very hard worker. And you know, what I started doing with him is I started, you know, moving around with him because I liked traveling from that time itself. मुझे travel का बहुत एक शौक था. And he used to travel a lot in India. I used to go to many parts of India. So I used to tag along with him during my holidays or during my off days. And that's when I started culturally understanding corporate world at a very early stage. Because he used to manage a lot of people, almost 5,000 people were under him, but then the delegation, how he used to manage, you know, the ecosystem. I think that learning came very early. And then as I was doing my engineering and my MBA, I started, of course, understanding it much, much better. So that actually has got ingrained in me. And there are some 3-4 things. Being human is very important. Knowing your people and creating a trust amongst the people whom you are working with, removing the hierarchical barrier, you know, when you are running an organization, because you have come up the ladder and you still would like to be amongst masses, being with their family, you know, all that stuff. He should demonstrate that in multiple places. So that, you know, subconsciously I captured that. It was in my learning. And that's, you know, a very important thing, because he was very much outdoor, you know, he was not at home. But that learning, you know, really remained with me. And the other side is he's also an engineer, you know, he was also an engineer from Shipwood, and he was one of the toppers there. So I learned a lot of, I'll say, data, you know, science. He used to teach me during the weekends. So उससे क्या हो गया, that combination really made me good in my early part of my career, how to manage people. I think that's the thing which we do as we progress in your career. You know, you know your stuff, but managing people and managing large scale business is what I learned from him at a very early stage. So I still feel he is my role model. पैसे की बात आपने अपनी माँ से सीखी. Yeah, so that's the other इतनी part. अच्छी स्टोरी मैंने खोज के निकाल लिया कि भाई कूच बिहार की थी वो, इतनी अच्छी जगह. Yeah, she's from वहां से आपके पिताजी से शादी करके मुंबई आना पड़ा. correct. और फिर भी हाउसवाइफ, होम मेकर Yeah. होते हुए बचत कैसे करें, इन्वेस्ट कैसे करें, तब हालांकि उतनी ना तो आपके ये इतना फ्लरिशिंग सेक्टर था, I know, correct. लेकिन जो था सामने उन्होंने अपनी तरफ से कितनी अच्छी तरह से किया. Yeah, so I think जैसा कभी हम जब बोलते हैं कि woman of the family is the finance minister or the person who actually manages the finance, and today also it happens in many families. So at a very early stage, you're right, mother was from a small you know, part of India, but of course Kuch Bihar is known for many other things. Lot you of know, things, lot बहुत of history है things. उस जगह. It's cricket, it's you know, a lot of other things, princely state, etc. So she comes to Bombay, and then I'm born. As you said, government of organization में, you know, पूंजी थोड़ा छोटा होता है. But good part, I think, on hindsight, is because she was working in our early part of our career, of our life. So that probably brought in her thought process on savings very early. And then I used to see, as I was growing, this person, my mother, you know, she used to always think that today what Warren Buffett talks, and maybe we keep educating ki whatever earnings minus your expense is equal to saving. She used to do the opposite at that point in time. Earnings, whatever household earnings used to be there, minus she used to do her
investment, and that Rest was finally your is to be spending. Wow. the spending part. And actually, she was very diverse in her thought process. We talk about inflation today. She was very clear that अगर घर का खर्चा को चलाना है, then आगे जाके you have to build assets, you have to make the money grow. So रिटायरमेंट के लिए क्या चाहिए, एसेट्स बनाना. बॉम्बे में एक एस्पिरेशन है घर खरीदना, हर एक जन का होता है, स्पेशली इफ दे आर कम माइग्रेटिंग. So at a very early stage she started moving into beyond savings to fixed deposit. That time fixed deposit rates were definitely very attractive. What very interesting thing is that today we talk about mutual funds. She started investing in US 64 much earlier. So I still remember the US 64 investment and the FD investments. Today we talk about reinvestment, compounding. Whatever quarterly interest used to come, she used to again reinvest that. So somehow, subtly, though not educated to that extent from a compounding point of view, the money started compounding, and the wealth started growing very fast, which I think was a big learning for me as I started entering into my corporate world, and saving to investment journey for me started. So that was something which I really learned. This is how the corpus gets built, and that's what we talk about it every day. The other thing, I think, building asset. You have a liability, you have got investment also, but to build an asset. So I think building asset was from the corpus which was getting accrued. That came very early. So we could buy a house much earlier. All that stuff happened. Take limited sort of create a limited liability pool, but build an asset. That asset will compound in the future. So I think those things were the big learning she gave to me personally, and I do carry that, and my messaging and my communication to when I go and meet people, that remains. Start early, make the money compound, think about what is your expenses, but save and invest properly. कितनी सिंपल बात देखिए उन्होंने कही और प्रैक्टिस किया. जब ना इस देश में इंटरनेट था, ना इस देश में तब टेलीविजन कुछ नहीं था. I still feel that she used to learn maybe. हमने कॉम्प्लिकेट कर दिया लाइफ. कॉम्प्लिकेट कर दिया. आपने कहा कि आपको ट्रैवल बहुत अच्छा लगता है. ये आपकी बंगाली जीन है, क्योंकि तो है. देश में मिसाल देते थे, आज भी है, अगर कोई ट्रैवलर कम्युनिटी थी तो बंगालीज थी. अब भी है. It's there. Tourism is in their blood. For me it is more, of course, for work. मैं बहुत travel करता हूँ. And the culture of India is very varied. Every 100 kilometers you travel, culture changes, language changes, food habits changes, the way of investing keeps changing. People's way to language changes. The behavior towards you changes. Foodie है? Yeah, street foodie हूँ मैं थोड़ा सा. ये भी बंगाली जीन है. बंगाली जीन मतलब मुंबई आ गए लेकिन ये जीन तो नहीं. So my sales guys and my team, when we are traveling in Bombay also, I'll make them discover certain points where the food is good, similar to other cities. I think travel, that's the best way to understand India culture. And अगर mutual fund को और आगे बढ़ाना है, then that's another way to probably understand culture and build the businesses in those markets. मैं म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा था. मैं खुद का तो मेरा बहुत ही शौक है, बहुत ज़्यादा शौक है. और संगीत? I like listening to music. I can't sing. I do attempt to sing in certain times, but listening to music definitely is on. I like tabla, harmonium and all those things. Sitar is also something which I do like, which is also part of the thing. But I get limited time. But within that time, I do listen to Hindi songs, some bit of Bengali, and maybe I think these two are the. तो अपनी बंगाली धरोहर आपने. Yeah. So my mother had taught me to read and write, so I can still read, write, and talk, of course. So that continues to be in my culture. आपकी वाइफ है फाइनेंस मिनिस्टर क्या आप? No, so घर के. I think घर का तो वाइफ ही है. ना ये तो आप पोलाइटनेस में कह रहे हैं कि बड़ा डर लग रहा है आपको कि मैं ना बोलूं तो. नहीं, she is there, of course, because
Most of the time, we keep traveling, and our work is so, it's exhaustive. But then she takes care of the entire thing for sure. घर का पूरा वो घर का जितना हो सके. कि बेटी Betty, she is of course studying abroad. I know. She has just come in Architecture now. पढ़ रही हैं वो Yeah, she has just come in. So I don't think she has yet come to that stage of managing the finances. But she tells the mother what not to do. अच्छा That's a good part, अरे वाह which I think she has learned staying abroad. एक बात जो सुनी हो आपने जो कहा हो उसमें Yeah, so I think what she is started talking about is now today in this Swiggy world, Zomato world, we buy everything very impulsively. I think that's what she is trying to say, that when I'm staying abroad, I think I am on my own. I have not stuffed myself with so many things. Why so many things are coming to the house? Somewhere that subtle message she is giving इतनी बड़ी to बात कह गई बच्ची to the mother. But Wow. yeah, so that's how it is. तो आपने इतना कुछ समझाया सबको मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी दिन जब मुंबई आऊँ तो आपके साथ स्ट्रीट फूड खाएंगे जरूर खाएंगे सर. और कभी कोलकाता भी साथ जाएंगे Oh yeah, Kolkata, I'll take your guidance for sure. थैंक यू वेरी मच Thank you. फॉर Pleasure कमिंग बाय एंड शेयरिंग योर थॉट्स और आपने इतनी ऑनेस्टी के साथ इतनी अच्छी बातें सिंपल तरीके से कही बहुत बहुत धन्यवाद Thank you, sir. Thank you very much.